आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट 4 जीके के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 को देखने वाले। इससे पहले आपने अगर 3 पार्ट को नहीं देखा हो तो उसको जाके जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आप 20 क्वेश्चन कराए गए हैं। क्या पे पार्ट 4 में देखेंगे। और आप जो है बाइलिंगुअल में अगर देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैक्स आपके 37 वीडियो जो है इस बार के रिसेंट अपलोडेड हैं आपके, तो उसको भी दे सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके अपलोडेड हैं, 2019 और 20 के दोनों अपलोडेड हैं। और एग्रीकल्चर फिजिक्स का भी अपलोड कर दिया गया है। मैथ के तो पहले से ही अपलोडेड थे, तो बाकी जो है आपको देख सकते हैं, उनको भी जा कर के शुरू करेंगे और देखेंगे वहाँ पर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। MSc का भी आपको प्रीवियस ईयर का जीके अपलोडेड है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट जितने भी जो है MBA वाले हों, MSc वाले, PhD वाले, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ पीपल ऑफ हाउस, यानी लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पीपल ऑफ हाउस फादर इज कॉल्ड दी गणेश वासुदेव मवालकर, यानी GV मवालकर। GV मवालकर इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल ऑफ हाउस और चेयरमैन ऑफ द हाउस। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट is the Rajendra Prasad and people of house first president or chairperson is the Ganesh Vasudev Mawalkar. Meera Kumar is the first female chairperson of the people of house and Om Birla is the current chairman. Next one, where was the first Buddhist association held? Its right answer is the Rajgir. 483rd is the first बुद्धिस्ट एसोसिएशन, यानी बौद्ध संगत की बात की जा रही है। एंड फर्स्ट वन इज दी और इधर आपका राज वैशाली है और इधर आपका पटना है। एंड नेक्स्ट वन आपका क्या है, कुंडलवन। तो फर्स्ट आपकी जो बौद्ध संगत हुई कहाँ पे हुई, तो आपकी राजगीर में, याद रखिएगा राजगीर में फर्स्ट वाली। दूसरी वैशाली में की गई। तीसरी आपकी पटना, यानी पहले जो इसका नाम क्या था, पाटिलपुत्र था, याद रखिएगा ये लिखा है पाटिलपुत्र। ओके, तो यानी फर्स्ट वाली आपकी यहाँ पे हुई, दूसरी वाली आपकी कहाँ पे हुई, तो वैशाली में हुई। फर्स्ट यहाँ पे, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपकी कुंडलवन में। ये आपकी फर्स्ट जो हुई थी 483rd में, ए आपकी 383rd में, ए आपकी 255 में एंड लास्ट वन इज दी 78 AD में। ओके, याद रखिएगा सभी चीज़ें। इनके आगे जो है सभी के आगे BC लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे 78 AD आपका रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14। तो आपका 6 से 14 वर्ष की उम्र का जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है उसको किस आर्टिकल के तहत किया गया, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 and 14 इज राइट टू आर्टिकल 21st एज गिवन a right compulsory education age of 6 and 14. And next one is the article 19A is the freedom for spoken, यानी बोलने की आज़ादी देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 April. 22 March is the water day and 20th March is the sparrow day and 21st is the yoga day. International Yoga Day is celebrated on the 21st June. Next one, who was the last ruler of Delhi dynasty? दिल्ली डायनेस्टी इज द लास्ट रूलर, वाज दी रहेगा, इज दी नहीं, वाज दी। यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली डायनेस्टी। एंड नेक्स्ट वन, वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड?
Most time asked that questions. Where is the Kaziranga National Park? Kaziranga National Park is situated on the Assam. Rhinoceros. Rhinoceros. वन और यानी एक सिंग वाला जो है राइनोसोरस के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और मानस, मानस वन्य जीव, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी also situated on the Assam. Most important. Next one, who was the only Indian to participate in the 3 round table conference? यानी both first round table and second round table and third round table are both and 3, also 3. Who is the participated? That man is the Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is the participate in the all 3 round table conference, and Mahatma Gandhi was the participate in the only second round table conference. And when asked you the Mahatma Gandhi was the when and which round table conference participated, then answer is the second right answer. And Bith is the Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is the also participated in the second round table conference. Next one, where is the headquarter of International Court? International headquarter court. International Court headquarter is the Hague and Karl, Netherlands. Netherlands. It's the right answer. Next one, in which year was the Nobel Prize awarded to Rabindranath Tagore? First person who is the awarded with Nobel Prize in Asia and also in India. That was the year 1913. 1913 for the Gitanjali. For the Gitanjali, Rabindranath Tagore given the Nobel Prize. Next one, Ibn Battuta came to India during whose reign? Ibn Battuta was came into the region of the Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq, ruler that time when Ibn Battuta came to the India. Next one, when did the women participate in election for the first time in India? That's the right answer is the 1999. सॉरी यहाँ पे 1919 है, 99 नहीं देगा, 19 ओनली, 1919. नेक्स्ट वन, हु इज़ द कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? हु इज़ द कॉल्ड ऑफ बिस्मार्क ऑफ इंडिया? And right answer is the Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel is the called Bismarck of India, and Mahatma Gandhi is the father of India. Father of India. And Dadabhai Naoroji is the grand old man of India. Grand old man of India. Grand old man of India. Called the Dadabhai Naoroji. Next one. What is the hard part of the Earth's surface called? That's the outer part of the your GK syllabus, but that's the important question, so that it's included in the video. That's right answer is the rocks. Called it's the rocks. Rocks is the hard part of the Earth's surface called. Next one. Which of the following atmosphere is the considered ideal for flying airplanes? And right answer is the stratosphere. Stratosphere is the best for the flying aeroplanes. Right answer. Next one, which country called the land of setting sun? Setting sun called the which country? Its right answer is the Britain. Britain is the called the setting sun, and rising sun is the called Japan.
rising sun called the Japan, and midnight sun, midnight sun country, rising sun country is called the Japan, and midnight sun country is the called the Norway. Next one, where is the opera house located? Opera house is the big building, and it's the important because he lives the president of Australia. So that's the right answer is the Sydney, Australia. Next one, which is the state with maximum sex ratio? Minimum sex ratio, which state? That's right answer is the Haryana. Haryana sex ratio is the 879. That means is the 100 men, only 879 women. That's is the less than many more. And 121st person is the that not completed his couples, and so that you make a good sex ratio in the your district and your state, so that remember it's. And next one's best is the Kerala is the best sex ratio in the India. If you want to know that what is the UP and what is the your district, then it's the recognize and learn it, because near is the 21st census is the now counting started, so that it's important for the 2011 census questions is the important. And first time and last time remember it and then completed. And next one is the 2021 next census coming soon. Next one, on which of the following river is the Mata Tila project located? Mata Tila project is located on the Betwa river. Betwa river. Next one, which of the following national park is called the Haven of Birds? Which of the following national park called the Haven of Birds? The right answer is the Keoladeo Ghana National Park. It's situated on the Rajasthan. That's the biggest national park for the birds. It's called the Haven of the Birds. And Kaziranga is the Assam, and Jim Corbett is the Uttarakhand, and Bhitarkanika is the Odisha. And it says the riddle for the riddles. It's the right answer. Next one, right answer is the first. Next one, which is the largest tribe of India? And it's a PDF on the join us on the Telegram Finance Jambitasi sir. That's right answer is the Gond. Gond is tribe is the biggest tribe in the India. Okay, now your 20 questions is the completed, so that it's a very important. Okay, now it's a share and the meet in next video. Thank you.